मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव जरूर बैठ जाए इसमें कमेटी में। लेकिन सर अगर अल्टीमेट में अगर आपको उससे तो अग्रीमेंट होगा ना, उसके बाद अग्रीमेंट होता है ना। पहले ये लोग अपना वर्कआउट करेंगे आपस में, हम किस टर्म्स उनको ऑफर करें, क्या टर्म्स हम उनसे लें, फिर आता है एग्रीमेंट। दूसरी साइड एग्री करे ना करे, एग्री नहीं जी हम नहीं मानेंगे एग्रीमेंट, मत करो एग्रीमेंट, किसी और से कर लेंगे। सर इसमें प्रॉब्लम एडजस्ट। अच्छा ये बताएं कि आपने एडवर्टाइज किया इसका? हो सकता है ऐसे लेकर होते हैं बिल्डर्स, आपने एडवर्टाइज किया कि हम सोसाइटी को बंद करना चाह रहे हैं, तो बिल्डर साहिबान आइए बिड दीजिए, आप पार्टिसिपेट करना चाहें, हो सकता है टर्म्स आपको मिल जाते किसी और से। आपने तो पहले इंतखाब कर लिया कि मुझे एग्रीमेंट ही इसी पार्टी से करना है। नहीं सर, ये इज ट्रांसपेरेंट। सर जब ये एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ ना, उसको ये टास्क दिया गया कि ये इसकी डेवलपमेंट के लिए आप वकील साहब आपने ऑक्शन परचेज सुना है? ऑक्शन परचेज बिल्कुल बिल्कुल जो ऑक्शन परचेज, वो ये तो नहीं कहता है जी फलां आदमी को बेचना है जमीन, सही बात है। वो अखबार में खबर देता है कि जी ये जमीन बिकना है। जी सर, आप बताइए, आइए इंटरेस्टेड लोग जो भी है। जी सर, बिड प्रोसेस होता है, जी सर, हर तरीके से होता है। आपने तो पहले इंतखाब कर लिया कि ये होगा बायर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हर मोड़ पे आप देखें कोई सही काम नहीं। पहले आपके कानून में गुंजाइश नहीं है, फिर पाकिस्तान के कानून में गुंजाइश नहीं है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर माय लॉर्ड ने पॉइंट आउट किया उसकी मुद्दत खत्म हो गई, फिर कर दिया, हुक्म आ गया दरबार उनके 3 लोगों को बिठा दो कमेटी में, माशाल्लाह। सर उससे पहले अच्छा फिर ये बताइए कि भाई बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बिल्डर्स हैं, ये आप देते ना ट्रांसपेरेंट, अखबार में आ जाता कि जी कौन लोग इंटरेस्टेड हैं, आइए हमसे नेगोशिएट कर लें। आपने पहले कैसे इंतखाब कर लिया? डेवलपमेंट के लिए किया गया मुख्तलिफ NLC FWO। किधर एडवर्टाइजमेंट का? एडवर्टाइजमेंट तो नहीं है, जो रिपोर्ट है उसमें मेंशन है। आप वो फोन करके पूछ लिया होगा ना, और यकीनन उधर से जवाब आया होगा कि नहीं। 15A के इंसर्शन के बाद जो प्रोसेस है आज भी मर्जर का, माय लॉर्ड, इलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी पहले प्रपोजल डिस्कस करती है, फिर वो एडवर्टाइज करते हैं, फिर वो एजेंडा रजिस्ट्रार से अप्रूव करवाते हैं, उसके बाद पब्लिकेशन होती है फॉर इनविटेशंस, और उसके बाद स्टेज आती है कि जनरल हाउस का इजलास होना है और उसमें ये एजेंडा डिस्कस होना है। तो पहले दिन इन्होंने फैसला कर लिया कि इनसे करना है, और एजेंडा आप जो अच्छा अब बाकी चीजें भाई करना तो ये है, बाकी आप देख लेना, कर लेना सारी चीजें। लेकिन साहब आप है ना, आप कानूनी काम कर लो, बाकी मैंने तो फैसला ये कर लिया है। लेकिन सर इस फैसले का बहरिया ने, भाई हम कब कह रहे हैं आप 3.5 अरब रुपए का लॉस किया। आपसे कब कह रहा हूँ कि आपने गलत किया? मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बारे कह रहा हूँ, आप फिक्र ना करें ना। नहीं मैं नहीं कह रहा। हाँ हम तो इनकी देख रहे हैं कारकर्दगी। जी सर, मतलब सो डिस्टर्बिंग। अच्छा फिर तो ये हो गया। अच्छा फिर बहरिया ने भी अपने पास नहीं रखा, उसे आगे भेज दिया। सर वो 2007 में हुआ, उससे पहले हमने। अच्छा इनके साथ एग्रीमेंट किधर है बहरिया के साथ? हाँ 2 दिन सर, पेज 108 एग्रीमेंट दिखाइए जरा। 2 दिन में एग्रीमेंट हो गया और वही एडमिनिस्ट्रेटर करना है जिसके टेन्योर वकील साहब इतने यानी कि विजिलेंट थे लोग सब कि 2 दिन में एग्रीमेंट भी हो गया, 15 को चीफ मिनिस्टर ने अप्रूव किया, 17 को एग्रीमेंट भी साइन हो गया, और एग्रीमेंट पे भी वही आदमी एंटर हो रहा है जिसकी टर्म एक्सपायर हो चुकी थी। एग्रीमेंट दिखाइए पेज 28 के ऊपर। वो कुछ नहीं बोलना, यानी कि दे वर सो विजिलेंट के 2 दिन के अंदर, बीच में सिर्फ 1 दिन बच रहा है 16 का। 15 को चीफ मिनिस्टर साहब अप्रूव कर रहे हैं, बीच में 1 दिन बच रहा है 16 का, 17 को एग्रीमेंट साइन हो गया। जी ना, वेरी गुड, वेरी क्विक। और एग्रीमेंट पे सुन तो लीजिए वकील साहब, सुन तो लीजिए। और एग्रीमेंट में एंटर कौन कर रहे हैं?
वही साहब अब्दुल्ला सिद्दीक। जिनकी टर्म एक्सपायर हो चुकी थी वे बैक इन 10/11/2004। रोशनी ने उन्होंने डाली थी। और वो एडवर्टाइजमेंट के एजेंडे पे कॉर्नर में लिखा है मर्जर का, कॉर्नर में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखी। ये जो सारा एक मुहावरा चलता है पाकिस्तान में, पता नहीं आज उसकी शायद अक्कासी मिल रही है इधर, पहिए लगाने वाला। इन्हीं से इसमें तो कोई जेट इंजन लगा हुआ है। एग्रीमेंट इमीडिएटली ये तो 2004 से प्रोसीड कर रहा था ना, सारे मराइल गुजार के ये फाइनल हुआ ना। जब पहले आप इंतखाब कर चुके, मराइल तो बाद में आ रहे, फिट करने में बाद में। उसमें कोई दो राय नहीं सर, आपकी बिल्कुल। अच्छा ये जरा एग्रीमेंट में देखें क्या लिखा है। जी सर। सर ये पैरा 2 है सर। पैरा 1 है मर्जर अमलगामेशन प्रपोजल इज कंसीडर्ड वायबल एंड the best interest of the members. All of these members are RHS shall be given possession as the following scheme. The parties are not subject if the sites shall remain in possession as per existing European law. ये एग्रीमेंट हो रहा है कि 5 साल तक इनके इमरान को क्या करेंगे, पर क्या करेंगे। अच्छा 5 साल अगर एग्रीमेंट करने तो आगे ये जमीन आप किसी और को मुंतकिल कैसे कर सकते हैं। In case of the uncleared site desire to take possession within 2 years, he will have the option to give his reference for alternate offer plot in phase 9 of Bahria scheme. उन्होंने जब ये रेफर किया तो उनको प्लॉट्स दिए, जिनका कनाल का दिया, जिनका 10 मरले का था 10 मरले का, और जिन्होंने पैसे वापस लेते वो पैसे देते। अब आप शर्मिंदा होंगे अगर मैं भी मैं कुछ कहूँ, आप शर्मिंदा होंगे। ये जरा दिखाइए एग्रीमेंट में, जरा देखिए ये मैंने शायद 5 साल की तारीख में पहला एग्रीमेंट ऐसा देखा। जी जरा देखिए ये आप एग्रीमेंट दिखा सकते। आप 2 लोगों से एग्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब वो जहमत मिली है कि उस टाइम खरीद ली 100 रुपए का। किसी पता हो गया कि हमने अपने आपने ऐसा एग्रीमेंट देखा है, अपने क्यों कर रहे हैं, सभी कुछ आती है हो रहा है। बात हमने कंप्लेंट कि ना भाई इससे साबित क्या हो जाए, छोड़ो अपने नेट पे कम से कम इस हद तक ईमानदारी है कि अपने लेटर पे हो जाए। आप किसी और एग्रीमेंट कर लो, अपने लेटर पे आप तो एग्रीमेंट सुनते हैं, स्टैम्प पेपर होता है, खरीदा जाता है, वो चीज़ हमें देखी स्टैम्प ड्यूटी में बचा ली। एग्रीमेंट ट्रांसफर प्रॉपर्टी एग्रीमेंट है, registration act comes into operation, stamp duty act comes into operation. How have they been bypassed? ये सब bypass की limitation बता रहा है, sanction land agreement to sell land, जैसे को हमने उसको कुछ duty लगती है, can it be used as evidence if it's not stamped? इधर कुछ stamping भी नहीं की, तो ये बुनियादी बात है। You are being conveyed land, ये conveyance है, और उसमें stamp duty लगी 80% पता नहीं पंजाब में कितनी परसेंट है स्टैम्प ड्यूटी। इसी में तुम्हारा लॉटरी स्टैम्प ड्यूटी की नॉट एग्रीमेंट स्टैम्प ड्यूटी कितनी है, मतलब उस वक्त ओवर मेंस दी उस वक्त 4% में एट दैट पॉइंट टाइम चेंज होती है, उस वक्त 4%। ये चीजें नहीं नजर आएंगी स्टैम्प ड्यूटी को, मेरे पास ये प्रॉपर्टी होगी तो पहुंच जाएगी नोटिस, तो स्टैम्प ड्यूटी कम दी। हमारे पास एक बच्चे साहब ने कुछ 15,000 रुपए का यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे फिर वो स्टैम्प ड्यूटी कम हो गई। ये वैल्यू दे रहे हैं जो इन्विटेशंस हुए उस पे जो रेट था उसके मुताबिक पेमेंट की। भैया आप कमर्शियली हम आपको कब कह रहे हैं ना कि आपने कुछ गलत काम किया।
ये जरा देखिए ना, ये बहुत अच्छी बात है ना कि पाकिस्तान में पता चले लोगों को कैसे काम पाकिस्तान में। आप जाइए जरा घर रजिस्टर करवाने, कितने मराहल से गुजरना होगा। वो पहले ट्रांसफर टैक्स, फिर रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, फिर स्टैम्प ड्यूटी, फिर पता नहीं क्या क्या। ठीक है, ये मिनटों में काम हो गया। अपने लेटरेट पे करो, कोई चीजों की परवाह मत करो। सर अगर पेज 138 पे आ जाए तो मैं सारी सूरत हाल आपके सामने रख देता हूँ। हम बेशक आपको टाइम देंगे, तरतीब से चलते हैं ना। जी सर। और ऐसे ना इस एग्रीमेंट पे सरकार की कोई दस्तखत नहीं है, अप्रूवल कर रही है सरकार। एग्रीमेंट साइन कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटर। सर ये है पेज 30, हाँ दिखाएं पेज 30 and also हामिद अली खान DCO रावलपिंडी आर्बिट्रेटर इनको एज DC आर्बिट्रेटर के तौर पे कर रहा है। एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंजाब गवर्नमेंट। कहाँ लिखा हुआ है सर ये क्योंकि इसको इसमें आर्बिट्रेटर मुकर्रर किया था इसमें। He is alien to the scheme of law. He is nobody. But he signed it. He is nobody. He is completely alien to the scheme of law. नहीं, I know. इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, पता नहीं आप लोग मजाक कर रहे हैं हमसे, आज क्या करने आए, या रोए या हंसे, हम क्या समझ नहीं आ रहा इधर देख के चीजें। अच्छा ये हो गया एग्रीमेंट। अच्छा कितने दिन ने रखी, फिर ये DHA को कब आपने जाके कर दिया उनसे एग्रीमेंट? सर 2007 में ट्रेड ऑफ एग्रीमेंट हुआ है। तो आप एक एग्रीमेंट करने चले, इस पे चलते हैं, मान लेते हैं कि एग्रीमेंट है बहुत जबरदस्त, तो आपने तो इसमें कहा 5 साल को आप अपनी कमिटमेंट दे रहे हैं, तो आप आगे कैसे बेच सकते हैं कॉर्पस ऑफ द एग्रीमेंट? सर इसका मैं कह रहा हूँ ना कि क्योंकि मेंबर्स ने ऑप्ट कर लिया अल्टरनेट प्लॉट एज पर टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट हमारे बहरिया टाउन के मुख्तलिफ फेजेस में, तो हमने उनको अलॉट किए 1126 थे अलॉटीज जिनको हमने प्लॉट अल्टरनेट अलॉट कर दिए, और बाकियों ने ऑप्ट किया फॉर रिफंड ऑफ द अमाउंट एज पर एग्रीमेंट, उनको हमने रिफंड किया है। ये हम उधर जा ही नहीं रहे ना, अलॉटीज के मैं टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ। इसमें तो ये नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि ये पोजेशन टू मेंबर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years। सर उसको पूरा पढ़ लेना, नीचे लिखा हुआ है as regards undeclared sites due to any problem or where private landowners are creating hurdles, the barrier town shall resolve the matter and hand over possession to these members within a period of 5 years. In case the allottees of uncleared site desires to take possession within 2 years, he will have the option to give his reference for allotment transfer of plot in phase 9 of barrier town. अब उन्होंने ऑप्ट किया, उन्होंने 1126 लोगों ने ऑप्ट किया जी कि हमें बैरियर टाउन के मुख्तलिफ फेजेस में दे दे, उनकी चॉइस पर हमने उनको प्लॉट अलॉट किए। उन्होंने तो हाथ जोड़े होंगे भाई कुछ तो मिल जाए, तब वो प्लॉट वो बेचारे क्या करेंगे, करोड़ों की मालियत के इस टाइम है, इसमें भी प्लॉट हमने किए 1126 लोगों को हमने अलॉट किए, 781 लोगों को हमने रिफंड किया। ये नंबर्स हम पे ना दीजिए, हम कागजात से चलेंगे। टोटल अलॉटी 95। आप दिखाएं ना मतलब ये मैंने पूछा क्योंकि तो हमारे सामने फिर लोग आए क्यों हैं? मतलब मैंने ये पूछा, सोसाइटी रिज्यूम हो गई सर 2012 में, रिजम्पशन का ऑर्डर कर दिया रजिस्ट्रार ने 2012 में, इन्होंने कभी रिकॉर्ड या चार्ज वापस नहीं किया। मैंने अपने कॉर्पोरेट के लोगों से पूछा कि मुझे वो ट्रांसफर लेटर चाहिए और वो कंपनसेशन के प्रूफ चाहिए, लोगों को पेमेंट हो गई आज पर डेट पेंशन के सारे हमारे पास कुछ नहीं, इन्होंने नहीं प्रोवाइड। सर मैंने सारी ये कोर्ट में प्रोवाइड नहीं, तो हमारे सामने अगर ये आपने सब कुछ किया है तो ये लोग हमारे सामने केस लाए क्यों हैं? सर 60 लोग हैं, मैं उसकी लिस्ट भी लगाई है मैंने। 60 लोग हैं टोटल नोटिस में से, जिन्होंने अभी तक या हमारे साथ कांटेक्ट नहीं किया या वो एग्री नहीं हुए अल्टरनेट प्लॉट या जो डिटरमिनेट की कोर्ट ने प्राइस। IC के दौरान वैल्यूएशन कमीशन ने विद कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स वो एक वैल्यूएशन कमीशन बना, उसने जब सिंगल बेंच ऑफ के ऑर्डर के मुताबिक मार्केट वैल्यू की डिटर्मिनेशन के लिए मुकर्रर किया, उन्होंने वैल्यूएशन मुकर्रर कर दी। उसके बकायदा 3 अखबारात में इश्तिहार दिए गए कि जिसका जो क्लेम है वो आके वो उस मार्केट वैल्यू के मुताबिक पैसे ले ले जो
ऑनरेबल सिंगल जज पैसे क्यों ले, प्लॉट क्यों ना ले? प्लॉट जिन्होंने ऑप्ट किया उनको हमने प्लॉट दिया सर, पैसे भी लिए ना। जिन्होंने ऑप्ट आपको प्लॉट चाहिए या पैसे चाहिए? जिस प्लॉट चाहिए आपको, प्लॉट दिया, प्लॉट दिया, प्लॉट दिया सर, ठीक है, प्लॉट चाहिए। हम देख रहे हैं आगे को दे 11 से 26 लोग अपने प्लॉट दे इनको भी देंगे, क्यों नहीं देंगे? सर ये हमारे पास क्यों? सर बात ये है कि इनको ऐसी शौक नहीं होगा ना, केस के अंदर हाई कोर्ट में ये बात के बाद कमीशन मुकर्रर हुआ इनकी कॉन्सेप्ट के साथ, इनके कॉन्सेप्ट के साथ, इनकी कॉन्सेप्ट को आधार देखने का फिर ऑर्डर आता है में सारे दैट इज वेरी फन। वो अगर आप देखिए वैसे किसी लीगल चीज का ऐसा नहीं नहीं सकता मैंने चलो अब सब ये ऑर्डर में भी अभी नहीं कहा गया, अगर आपने प्लॉट देगा ऐसे तो हो जाए हमने प्लॉट दिए सब, हम अभी जो 60 लोग हैं नोटिस दे रहे हैं बाद में क्या देगा, जिसने प्लॉट लेना उसे प्लॉट ले ले, जिसने पैसे लेने कुछ ये क्यों है हमारे सामने पैसे जमा है उनके भाई इनको, इनके तो पैसे जमा है हाई कोर्ट में पैसे जमा है। Your Lordship, if I can assist on that. जी आप तो जी सर, ये जो हमारी CPLA फाइल You are for the allottees है क्या? for the petitioner जी जो who are before you, members, ये जो members, the ex members, अब जो इनकी कंटेंशन है कि हमने हाई कोर्ट के सामने जाकर वो छोड़े ना, आपको चाहिए क्या है? हमें तो जी प्लॉट चाहिए और वहां पे चाहिए जहां से आप ले नहीं रहे हो? नहीं, वो ये वहां पे देते ही नहीं है और ये दे भी नहीं रहे वहां पे। इन्होंने तो ऑल्टरनेट जगहों पे कहीं दूर दराज इलाकों में लोगों को देना शुरू किया है, एक्सटेंशन में दे रहे हैं। और दूसरा जो कॉम्पनसेशन की ये बात कर रहे हैं, कॉम्पनसेशन के लिए एक कमेटी बनाई जो प्रेजेंट पिटिशनर आपके सामने है, इसने उस पूरी कमेटी के ऊपर एतराज किया, इसने ऑब्जेक्शन फाइल किए, वो कमेटी की ऑब्जेक्शन उसके नोटेड हैं। फिर उस कमेटी ने क्या किया, जो हाई कोर्ट ने कमेटी बनाई उसने फर्दर डेलीगेट कर दिया एक और कमेटी को, उस कमेटी में भी जाके ये साहब जाके पेश हुए और उन्होंने जाके एतराज किया जी कि ये आप जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट फिक्स कर रहे हैं ये गलत है और इलीगल है, जो वहां पे गोइंग कंसर्न है वो इससे कहीं ज्यादा गुनाह है, आप मत दीजिए। जो इम्प्यूट ऑर्डर है, पैसे जमा करवा चुके थे? नहीं, हमने तो जमा नहीं करवाए, हमने तो देखे जो अमाउंट जो ओरिजिनली जो सोसाइटी में प्लॉट था उस टाइम पे जो हमने पैसे थे वो दिए फुल दिए थे और जी और डेवलपमेंट भी दी थी। नहीं, फुल दिए थे जी, 2,60,000 व्हाटएवर उतने ही थे उस टाइम पे। आप 60 लाख पे करें अगर कनाल चलिए रखे ना जी जी, दूसरे की थोड़ा सा दूसरे की बात सुनने के लिए भी जरा हिम्मत रखे ना। ठीक है ये जी बताएं। जी, पूरी अमाउंट जो उस टाइम पे मांगी गई थी वो हमने पूरी पे की। सब्सिक्वेंटली डेवलपमेंट चार्जेस की मद में भी कुछ पेमेंट्स हुई, उनकी डिटेल्स हैं हमारे पास। ये जो अब जहाँ पे उसके जो सब्सिक्वेंटली जिस टाइम पे हाई कोर्ट के सामने ये मैटर था इन दी ICA, उस टाइम पे जो वहां की वैल्यूएशन थी वो तो 8 लाख मरले के हिसाब से थी। इन्होंने जो प्लॉट की कीमत वहां पे दी है वो 60 लाख रुपए एक कनाल की प्लॉट की कीमत। हमने एग्रीमेंट्स लगाए हुए डिफरेंट लोगों के साथ जो उसी जगह पे उसी एरिया में लोगों के होते रहे हैं। ये अब जो डिटर्मिनेशन कर रहे हैं वो डिटर्मिनेशन इज नीदर हियर नॉर देयर। वो कितनी एग्रीमेंट से एवरेज बता दें सर, एवरेज लगी है, मैं ये बता दें। नहीं मैम, ये आप बता दो ना, ऐसी कोई हमने एवरेज लगाई हुई है, ओस ये लगाई है तो जो है ना 3 महीनों की भी ओस लगाई है, जो डीसी रेट थे वो भी लगाई है। मुकम्मल करने दें जी सर। उसमें उसके हिसाब से 8 लाख और 6 लाख रुपया मरले के हिसाब से। सर, ये तो जगह ही कोई और लोकेशन की है, ये ऑब्जेक्शन इन्होंने किया बकायदा, रियल बेंच ने उसको डिसाइड किया ऑब्जेक्शन को। ऑब्जेक्शन पे उन्होंने कहा जी कि ये खन्ना सर, साहब की पेज जगह। इनको बोलने तो देना, आप घबराएं नहीं ना, आप ठीक सुनेंगे, आपको नहीं सुन रहे हम लोग आराम से। पेज 153 देख लीजिएगा, CPLA ये सिर्फ बता देना, आप कोई एवरेज बता दो ना प्राइस। 8 लाख रुपया मरला, 8 लाख रुपए पर मरला। 20 मरले होते हैं कनाल 20 मरले होते हैं कनाल। तो कनाल कितने का पड़ता है? 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 60 लाख का ये दे रहे हैं 60 लाख रुपया कोर्ट के अंदर। अच्छा, ठीक है। और 2012 में, और वो पैसे आज तक ये वो इन्वेस्टेड है? ये पता नहीं वो जी नहीं, वो ऐसे पड़े हुए हैं या किसी स्कीम में इन्वेस्टेड है? हमने तो वो ऑप्ट नहीं किया फॉर दैट अमाउंट। ये तो इन्होंने हाई कोर्ट में, ये इनका मौकिफ ये है कि हमने हाई कोर्ट में वो जमा करा वो कोर्ट ऑर्डर पे जमा कराए हैं सर, हमने नहीं खुद जमा कराए। नहीं करना चाहते हैं आप? जी सर, तो वापस ले लो आप पैसे।
सर बात ये है कि नहीं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो वापस ले लें पैसे। नहीं, हमें तो कोर्ट ने ऑर्डर किया, हमने जमा करा दिया। कोर्ट को क्या जरूरत है पैसे जमा करने की? इनको इनके लिए होंगे ना, इन्हीं के बाकी सबने ले लिए, ये एक या दो लोग रह गए जिन्होंने नहीं लिए, बाकी सबने ले लिए। अच्छा 95% 95% मेंबर्स ये ना हो कि एक दो लोगों की खातिर आपके लिए बहुत बड़े मसले खड़े हो जाएं। सर हम तो अभी भी खड़े हैं कि नहीं, हम सिर्फ पूछ रहे हैं ना, सवाल ये, हम तो सारी बातें फिर खोल रहे हैं। 11 से 26 अलॉटीज का आप देख लें, जिस सेक्टर में दिया उस सेक्टर में अवेलेबल जो प्लॉट है हम देने के लिए तैयार हैं, उसमें भी 26 लोगों को प्लॉट दिए हैं हमने। इसी यही लोग, जी सर, ये मेंबर्स इसी मेंबर्स एक सेकंड जी, कुछ मेंबर्स ने ऑप्ट किया है फॉर द प्लॉट्स, लेकिन वो क्या करते, दे वर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। ये जो रिट पिटिशन फाइल किया उसके बाद सब्सिक्वेंटली दे वर नॉट पेइंग देम, तो जो लोग गिव अप करके वो एक सेकंड आप ठहर तो जाइए ना, इनको बात तो करने दें। some persons they gave up, वो जाके उन्होंने प्लॉट के लिए ऑप्ट कर लिया, कुछ लोगों ने पैसे ले लिए, लेकिन जो प्रेजेंट पिटिशनर्स आपके सामने, इन्होंने ना तो इनको प्लॉट दिया गया है और ना इनको कॉम्पनसेशन दी गई है। जो कॉम्पनसेशन इन्होंने कोर्ट में डिटरमिन करके जमा Are you prepared to amicably out of the court resolve these disputes or not? रोशप, if they आपसे पूछ रहे हैं। जी हम कर लेंगे अगर ये हमें प्लॉट देंगे तो। नहीं, हमें नहीं, जो भी अमिकेबली का मतलब होता है, प्लॉट दें, पैसे दें, आपकी मर्जी है, हम उन चीजों में तो नहीं पड़ेंगे। एमिकेबली का तो आप एमिकेबली बैठ के इनसे डिस्प्यूट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं? सर मैंने पहले भी कहा कि मैं आपसे एक सवाल सर पूछा। हम बिल्कुल वी आर रेडी सर, एमिकेबली सेटलमेंट के लिए तैयार। बिल्कुल रेजिडेंशियल प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट। भाई हमें नहीं पता ना, हम ठीक है सर, यही अर्थ आप है ना, इनको ये बात सोना आज दो, की नहीं। आप इनको चांदी दो या आप इनको मिट्टी दो, ये आप और इनके दरमियान सर बात है। ठीक है, हम आपको नहीं कहेंगे, हम सिर्फ पूछ रहे हैं, या तो बोलो नहीं मुमकिन ही नहीं है अमिकेबली रिजॉल्व करने का, वो एक अलग बात होती है। वी आर रेडी फॉर इट। तो एक तरीका तो आप क्योंकि ये हम इस पे अपने कोर्ट की ठप्पा नहीं लगाएंगे। आप ये कह रहे हैं दे आर रेडी, यू आर रेडी, तो व्हाई डोंट यू हैव अ मीटिंग, गिव एंड टेक का होता है बात, अगर आप करना चाहें तो कर लें। बिल्कुल हो जाए सर, वी आर रेडी फॉर इट। ठीक है जी, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी लिटिगेशन इन परपेचुइटी। इनको रिक्वेस्ट करते हैं हमारे साथ बैठ जाएं, वी विल सेटल। ही इज अ रीजनेबल पर्सन। Yes, he आप is जानते नहीं इनको, ये भी सीनियर हमारे वकील हैं, ही इज आल्सो एक्सट्रीमली रीजनेबल। हमारे साथ बैठने में कोई हर्ज नहीं है। हम तो अदरवाइज बैठते हैं इसमें क्यों नहीं बैठ जाएंगे, कोई रिजॉल्व होता है मामला तो। नहीं तो ये तो आप अपने तौर पे करें, हम इसका हिस्ट्री जरा समझ लें। तो फिर एक तो ये आप फिर बैठे हैं, इनके कोई टाइम और डेट फिक्स कर दें। जी ठीक। आप इसी बोट में या किसी और बोट में? आप नहीं सर, इसी में हूँ सर। मुझे तो इन्होंने प्रोविजनल लेटर भी दिया है, 19 साल हो गए हैं, तो मुझे कब्जा नहीं होगा। आप अग्री कर रहे हैं रिजॉल्व का या नहीं? नहीं रिजॉल्व ये वो आप लोग जाने, ठीक है। तो आप दो वकील हैं इस साइड पे? जी दो पिटिशनर भी दो ही। उनके साथ 5 लोग और भी हैं, और एक वो जो रिव्यू वाले साहब हैं वो भी होंगे। रिव्यू क्या मांग रहे हैं? वो एक मैं भी सर इसमें, वो भी अलॉटमेंट का इशू है। जी वो भी मैं 35 साल से सर। आप दोनों बैठ करके हसन साहब, पाशा साहब के साथ या किधर मिले? जी जिधर कहते हैं, इधर सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं। नहीं, आपकी मर्जी है सर, यू आर द सीनियर। सर हम, यू आर सीनियर एंड यू विल शो ग्रेस। ठीक है सर, मैं इनके पास आ जाता हूँ। नहीं, ये आपके पास आएंगे। जी ठीक है सर, डेट और टाइम आप लोग आपस में हम सेटल कर लेते हैं सर। कोई इशू तो नहीं है ना? कोई इशू नहीं सर, कोई issue। सर 80 साल इनसे मैं मिल लेता हूँ। वो आप ये कौन बोल रहा है बीच में? मैं सर, मैं भी ये आपके क्लाइंट है? आपका नाम क्या है? अब्दुल मजीद। अब ये आपने कोई केस फाइल किया हुआ है? जी सर, मैं भी इसमें इफेक्टिव सर। हाँ, तो ये जो आप वकील साहब से बात कर लेना, इनसे बात करें, आप इनसे बात कर लीजिए, आप इनसे मिल लें, फिर जो भी इफेक्टिव हैं उनके साथ आप डायलॉग में देख लें क्या होता है। सर मेरे दामाद नहीं, लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा नाम ट्रांसफर कर दें, मेरे नाम नहीं होता। ये एक चीज का ख्याल रखिएगा कि ये देख लीजिएगा कि इनका जो प्लॉट अलॉट हुआ था उसकी मार्केट वैल्यू आजकल क्या है, और आप जो कॉम्पनसेट करेंगे, जो अल्टरनेट प्लॉट देंगे, वो भी इक्विवेलेंट होना चाहिए। BMW का मुकाबला कल्टस से मत कीजिएगा वकील। नहीं सर, ये सारा देख लेंगे, हम बैठ के कर लेते। बस ठीक हुई है। रोशन, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाली जो चीज है ना, ये ऑर्डर में आ जाए, बिकॉज हम कुछ नहीं लिखेंगे। ये बैठेंगे तो ये चीज नहीं मानेंगे, वो उसका फिर वो compensation ये जो पहले ही हम नाउ यू आर लकी टू हैव सीनियर काउंसिल कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई व्हाई डोंट यू अवेल ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज अ सीनियर काउंसिल? हाँ,
वो आप 2 मांगोगे आपको 4 देंगे। हमें भी दे दे for contesting। क्यों, ऐसी बात है ना, हम आपकी जेनरोसिटी जानते हैं सर इंशाल्लाह बेहतर होगा सर। नहीं। खैर ये बात असाइड नाउ, ये अब इसके बाद डिफेंस क्यों आता है बीच में, ये जरा दिखाइए। ये तो एग्रीमेंट हमने देख लिया, इसके बाद वाला एग्रीमेंट दिखाइए। ये स्टोरी कंटिन्यू होती है ना, बैरियर ने डिफेंस से जो किया एग्रीमेंट, वो किधर है? वो ट्रेड ऑफ एग्रीमेंट है, पेज 37 पे है। हाँ, पेज 37 पे सर, इसी आपकी इंडेक्स पे। ये डीएचए की शेख साहब आपके वाले ना? नहीं सर, डीएचए की है। नंबर 2 बननी चाहिए। नहीं, आपने नहीं फाइल किया शेख साहब, आपने नहीं किया? मैंने दिया हुआ सर। आप अपना बताएं। मैं एक सेकंड। पेज एक सेकंड, ये सर है अवेलेबल एट पेज 259। पार्ट 2, ये पार्ट 2। इट इज ट्राइपार्ट एग्रीमेंट सर। ये मैं एग्रीमेंट जरा मुझे समझा दें, इसका मतलब क्या है इस एग्रीमेंट का, जो मुझे नहीं समझ आ रहा है। एक तो सर ये स्टैम्प पेपर पे है, जो जी स्टैम्प पेपर पे है सर। अच्छा, किसने खरीदा स्टैम्प पेपर? ये बैक साइड खामोशी कभी बेहतर होती है सर, वो ठीक है। गॉट इट सर। अब आपने निशानदेही कर दी, किसी ने नहीं खरीदा, चलें कोई बात नहीं। वो सर वो बैक साइड जरा फोटो कॉपी में नहीं आई, लेकिन अच्छा ये बीच में ये पेट्रो ट्रेड क्यों आ गए? सर इसमें असल ये था कि ये ट्राइपार्ट एग्रीमेंट था, इसमें जो रेवेन्यू सोसाइटी की लैंड थी उसके अलावा भी काफी लैंड प्रोवाइड कर रहे थे पेट्रो वाले पहले। फिर ये ट्राइपार्ट एग्रीमेंट आप सीधा साधा डीएचए से करते ही पेट्रो ग्रेड पेट्रो ट्रेड क्यों आ गया बीच में? पेट्रो ट्रेड ऑलरेडी एग्रीमेंट था विद DHA to provide land, to procure land for them. उसमें से इसमें से 3407 का एग्रीमेंट हुआ, जिसमें से 2833 सिर्फ सोसाइटी की, बाकी 575 नाम थे मोदी आपने मिक्स क्यों किया? सर आपने एक सेकंड समझ नहीं आ रहा। सर एक सोसाइटी है जो जिसके पास पैसे नहीं थी, जो चौपट हो गई, ठीक है। अब कैसे हुआ, उसने कहा कि जी बहरिया टाउन का इंतखाब किया उन्होंने। जी सर। जब वो बहरिया टाउन का इंतखाब कर पाए तो अब आप आगे वो जमीन किसी और को कैसे मुंतकिल कर रहे हैं? सर ये एज एजेंट ऑफ डीएचए एंटर हुए। अगर फर्स्ट पैराग्राफ अगर पढ़ लें जनाब। जी बताइए। माय लॉर्ड, वेयर एज Petro Trade is a private limited company incorporated under Companies Ordinance 1984, engaged in a real estate business and is working as an agent for DHA Islamabad to provide land to DHA Islamabad for its housing projects through sale, purchase, exchange, etc. from the respective landowners, for which a written contract has been signed between DHA Islamabad and Petro Trade, which shall be read as integral part of ये एग्रीमेंट कहाँ दिखाइए? ये हमारे पास नहीं है, ये डीएचए के पास दिखाइए। सर इसके साथ तो नहीं हमने लगाया। छुपा रहे हैं ना? नहीं सर, वो लगा देता हूँ। नहीं क्यों लगाएंगे? 2 महीने आपको दिए थे लगाने के लिए। सर जो रेलेवेंट यही था। रेलेवेंट था ना, आपने इस एग्रीमेंट में इसका तस्करा है। सर जो रेलेवेंट, आप ये क्यों छुपा रहे हैं? नहीं सर ये ट्रेड ऑफ एग्रीमेंट रेलेवेंट था, वो लगाया मैंने। आपने फैसला करना है, हमने करना है। सर वो हमने आपको हुक्म दिया था जी, तब ये फाइल करें चीजें, जी, तो ये आपने छुपाया है। नहीं सर मैं लगा देता हूँ। हम ठीक है, ये आपने छुपाया है। नहीं सर ये लगा देता हूँ मैं, भाई लगा देता हूँ मैं। बड़ी अच्छी बात है। जी सर। किधर कौन आया डीएचए की तरफ से? सर मैं डीएचए की तरफ से सर मैं ही। भाई उनका मुलाजिम कौन आया है? मुलाजिम कोई नहीं आया, मैं आप कौन है फिर? मैं सर उनका काउंसिल हूँ। जी
तो ये तो आप ये खुफिया एग्रीमेंट है, हमें पता ही नहीं इसके बारे में, तो उसकी बात क्या करें। अच्छा दूसरा एंड वेरेस पढ़िए। Integrated part of अच्छा आगे पढ़िए, for उसको छोड़ दीजिए। transaction made by DHA Islamabad. भाई आगे पढ़िए ना। All three parties. एंड वेरेस दूसरा सर, and whereas Messrs. Bahria Town Private Limited is a private limited company incorporated under Companies Ordinance 1984, engaged in the business of development and establishment of various housing scheme projects, and for the said purposes has purchased and is a lawful owner in possession of thousands of canals of land in different revenue estates of Tehsil and District of Rawalpindi and Islamabad. Mr. Malik Riyaz Hussain, the chief executive of the company, is fully empowered and authorized to sign and execute this agreement on behalf of the company-wide resolution dated 23rd August 2007, passed by the board of directors in favor of Malik Riyaz Hussain. And whereas DHA Islamabad has been established under ordinance such and such of 2005 and re-promulgated from time to time, being represented by its administrator Brigadier Iftikhar Ali Khan, who is fully authorized to enter into the sale agreement by virtue of aforesaid ordinance. Whereas ये एक सेट है ना, कई सवाल उठ जाते हैं ना। थाउजेंड्स ऑफ कैनाल्स, कोई तफसील नहीं है। दूसरी बात, आप हैं, आपका रोल है आमीन के तौर पे, आप अमानत है आपके पास, आप अपनी अमानत आगे कैसे दे रहे हैं। तीसरी बात, Ordinance 2 of 2005, which has been re-promulgated from time to time, is this legal? Re-promulgation of ordinances? सर उस वक्त तो हो रही थी। आपसे नहीं पूछ रहे ना, इनसे पूछ रहे हैं। Re-promulgation of सर ordinances। ये तो DHA से रिलेटेड है क्योंकि उनका ऑर्डिनेंस है। कानूनी सवाल पूछ रहे हैं। Re-promulgation of ordinances, is it allowed? ऐसा नहीं, अगर असेंबली फंक्शनल है तो फिर भाई री-promulgation फैसले हैं, ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता। तो री-promulgation of ordinance अभी तक ये promulgation पे चल रहा है या एक्ट बन गया? एक्ट बन गया, कब बना? एक्ट बन गया 2013 में। तो ये भी तकरीबन ये भी डाइसी एग्जिस्टेंस थी उस वक्त। चलें आगे बढ़ें। Sir, and whereas the company is a lawful owner in possession of land free from all encumbrances whatsoever, making approximately 3,407 canals. You are not a lawful owner. Absolutely wrong. You have been given this land for onward giving, distributing to the allottees. Sir. You are not the lawful owners. पता नहीं कहाँ से आप बन गए lawful owner इसके। सर वो कर दी थी हमने, कर दी थी, पता नहीं जी सर, कैसे। दिए थे उनको, प्लॉट्स दे दिए थे, बस जो ठीक है ना, जो कि मर्जी करें। मर्जर एग्रीमेंट है उसमें ये मेंशन है, ये सारी चीजें। देखिए ना, दुनिया देख रही है सर मगर ये चीजें नहीं नजर आएंगी ना। स्टैम्प ड्यूटी जो कलेक्ट करता है ना, रजिस्ट्रार को ना FBR को, वो आंखें उनकी बंद होती हैं ऐसे मामलों में। एट द टाइम ऑफ म्यूटेशन सर वो सारी फीसेस पे होती हैं। जो हमारी फेवर में म्यूटेशन आए हमने पे किए, जो इनकी फेवर में म्यूटेशन थे वो उन्होंने पे की। वो तो सर सारी जो अब आप म्यूटेशन की जो बात करेंगे ना, वो एक और इलीगैलिटी आपने कर दी। ये एग्रीकल्चर लैंड है, आप एग्रीकल्चर प्लॉट दे रहे हो, मतलब कितने कानून पाकिस्तान के तोड़ेंगे आप। आपने बात कर दी ना म्यूटेशन कैसे हो रहा है बताएं। हाउसिंग स्कीम्स म्यूटेशन कैसे पे चल रही है, ये मुझे बता दीजिए आप। लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत हो रही है। लैंड रेवेन्यू एक्ट मेरी समझ के मुताबिक एग्रीकल्चर लैंड को डील करता है। उस वक्त सर कंस्ट्रक्शन नहीं थी सर, ऑरल सेल को रेफर करके माशाल्लाह जो जवाब मिल रहे हैं ना वो भी नया भी आज है। क्या बात हो रही है, कंस्ट्रक्शन नहीं थी सर उस वक्त। ये तो आप कह रहे हैं ना मैं इस पे प्लॉट्स डेवलप करूंगा सर क्योंकि खसरा नंबर वाली प्रॉपर्टी थी और उस वक्त कंस्ट्रक्शन नहीं थी। अब जो उसके बाद जो हो रही है सर, वो सारी रजिस्टर्ड से लीड हो रही है। तो मतलब आपने वो भी आपने बचा ली? नहीं सर, वो हमने पेमेंट कर दी सारी सर। एग्रीकल्चर लैंड, आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं, वेयर इज द परमिशन टू कन्वर्ट लैंड यूज फ्रॉम एग्रीकल्चर टू रेजिडेंशियल टू अर्बन यूज, वेयर इज दैट नोटिफिकेशन? ये तो आपकी पूरी सोसाइटी इलीगल है। दिखा दें हमें कोई नोटिफिकेशन भाई, क्योंकि डेजिग्नेटेड एग्रीकल्चर लैंड है। आप इसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं ना टू अ डिफरेंट लैंड यूज, टू कमर्शियल टू अर्बन,
दिखाइए नोटिफिकेशन, दिखाइए जो चार्जेस आपने दिए कन्वर्जन चार्जेस वो कहाँ हैं? इस प्रॉपर्टी पे जो डीएचए को दी, फिर डीएचए ने इसको रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो दे दिया, उस पे कंस्ट्रक्शन हुई, तो वो इनको ये अब इनके पास हो सकता है कि कोई अगर इन्होंने आप परमिशन दोनों साथ खड़े हो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो? बात कर लो, आपके साथ एग्रीमेंट है इनका, बताते नहीं आपको? नहीं सर, हमारे लिए तो प्लॉट आपके लिए तो कानून पाकिस्तान का लागू ही नहीं होता है ना। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, हमने तो प्लॉट्स के लिए लिया था और लिखा भी यही हुआ है कि इसके कभी वो कन्वर्शन दिखाए ना, ये आपको बेच रहे लैंड नॉट फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, ये आपको बेच रहे हैं फॉर हाउसिंग कमर्शियल यूज। ये थी Where is the notification? Where is the payment of charges that you paid for land was acquired conversion use? land was acquired for the housing purposes sir, जो हमें मिली, जो इन्होंने मर्ज की। पाकिस्तान जो खुद कफील था ना खुराक में, अब नहीं रहेगा, क्योंकि आप हर जगह हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं सोसाइटी ने and totally illegally. Urban land is being converted to commercial and urban use. How? सोसाइटी ने आरडीए को अप्लाई किया हुआ था सारा लेआउट प्लान, इनफैक्ट जरा मुझे दिखाएं। पंजाब प्राइवेट हाउसिंग रूल्स हैं, उनके मुताबिक इन्होंने 2005 में आए, बना लीजिए एक और रूल्स, जाके शाम को छाप दीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सर पास किया। आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड कैन बी यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस सब्जेक्ट टू एनओसी फ्रॉम द आरडीए, उसके रूल्स हैं बाकायदा। अच्छा, हाँ जी, पंजाब प्राइवेट हाउसिंग रूल्स 2005 थे, उसके बाद सब्सिक्वेंटली 2010 में आए। दिखाएं, पढ़ें, एक्ट बताइए कौन सा है? पंजाब हाउसिंग प्राइवेट रूल्स है। मतलब इसमें आपको कोई लिस्ट बताएं कितने कानून आपने खिलाफ वर्जियां की हैं आप लोगों ने? सर हमने खत्म नहीं होगी लिस्ट। जी, can you use agricultural land for without going through the conversion process? No, my lord. What are the rules they are saying? Which rules? My lord, वो तो डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एक्ट के अंदर जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनी है, लाइक रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो No, but how can Bahria, DHA go and capture agriculture land, convert it itself and not into residential, commercial land? How can they do that? they cannot, my lord. They have to go through a conversion process. Yes, If my lord. Yes. the law allows it. Yes, my lord. If they pay the conversion charges. Because ये तो बहुत महंगे होते हैं, कराची में तो दे रहे हैं, आप ठहर जाइए ना। My lord, initially there is a master plan of every city. नहीं, सिटी की बात नहीं है ना, तो सिटीज तो ये तो उसमें चलेगा, और रूरल एरियाज में। उसमें फिर ब्राउन और ग्रीन एरियाज हैं। The green areas cannot be even allowed to be converted for the brown areas for development of societies or for residential purposes. The green will remain green. वो कन्वर्जन का पूरे रूल्स हैं, उसमें अप्लाई करना होता है, फीस डिपॉजिट होती है, उसके बाद इजाजत होती है। अब एग्रीकल्चर तो कोई करना नहीं चाहता पाकिस्तान में, सब एक हाउसिंग स्कीम बनाना चाहता है, सारी खाली पड़ी हुई हैं। जहां पे एग्रीकल्चर है भी माय लॉर्ड, वहां पे भी द हाउसिंग स्कीम्स, the influential people of housing scheme, they just intervened and they take over the lands. Where is the government? My lord, हम तो जो where is the government? जो करना चाह रहे हैं, agriculture land is a very valuable resource of the people and the state. My lord, हम तो जो अभी कर रहे हैं, अभी तो आप जाओ, पूरा पाकिस्तान एक वो बन गया है, urban sprawl. Restrictive. Who's going to feed the population which is growing? इसीलिए माय लॉर्ड वो ब्राउन और ग्रीन की अब क्लासिफिकेशन कर रही है। वी आर रिलीजियसली फॉलोइंग दैट। हम कोई ग्रीन ब्राउन में कन्वर्ट होने नहीं दे रहे, बल्कि गवर्नमेंट ने चैलेंज किया हुआ है एक कन्वर्जन, एक शहर का वो मास्टर प्लान में जो चेंज है। Yeah, but look at these big landlords, DHA, Bahria Town, Petrograde, क्या है? Petrotrade. इनको कोई पूछ नहीं सकता है। That is before you above the law. Or they make the law. Meeting, look at this. Where do we begin even? ये सब जो कन्वर्जन फीस के चार्जेस लगाए ना इन्होंने 2019 में रूल्स फर्स्ट टाइम बनाए हैं इन्होंने, ग्रीन और एग्रीकल्चर की कन्वर्जन के रूल्स जो बनाए हैं। मुझे सिर्फ बता दें, लैंड रेवेन्यू एक्ट किसको लगता है? और एग्रीकल्चर लैंड को लगता है। लैंड रेवेन्यू तहत म्यूटेशन होती है, कौन सी जमीन होती है? बिल्कुल आपकी बात सही है। तो फिर एग्रीकल्चर दूसरा कानून है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, वो अलग आ जाता है। आप एग्रीकल्चर लैंड को आप
वो कैसे कर सकते हो कमर्शियल और अर्बन में कन्वर्ट? देयर इज अ प्रोसेस, इज अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। एडवर्टाइज करना होता है, ऑब्जेक्शन रेज करना होता है, ये करना होता है। लैंड है, बंजर लैंड है, वो भी गवर्नमेंट तो उसी लॉ के तहत होती है। वेयर इज द कन्वर्शन बाय DHA? आप हमें रिकॉर्ड दिखाइए कि आपने अप्लाई किया है। या तो ये आपको कहेंगे जी हम बहरिया टाउन वाले कहें जी हम ये कन्वर्ट करके लाएं। जी सर, ये सुन लीजिए ना सर कि ये देखें ये हमने कन्वर्ट करवा ली है फॉर कमर्शियल रेजिडेंशियल यूज, फिर आपने खरीद ली, फिर तो आपकी खत्म जिम्मेदारी। ये आपने खरीद ली एग्रीकल्चर लैंड, तो आप दिखाइए सर आपने कैसे कन्वर्ट किया है। सर हमने एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदी, इनका मर्जर हुआ एक हाउसिंग सोसाइटी का, वो सोसाइटी की जमीन इन्होंने हमें दी, तो उसके लिए इन्होंने अपने पास टाइटल रखा और जो कि क्लियर था एट द रेलेवेंट टाइम, वो हमने चेक किया। बाकी अगर आपने जो सारी या तो आप अग्रीमेंट उस हद तक रखते तो अलग था, आपने इसको मिक्सअप कर दिया कि तुम जो ये क्या नाम है पेट्रो ट्रेड, तुम जो हमारे लिए जमीनें लाओगे, ठीक है, अब आपने उनको अपने चीज को कंटेमिनेट कर दिया इन द रेवेन्यू स्टेट्स ऑफ मुर्गा जराही पता नहीं कहाँ आपने खुद ही खराब कर दिया सारा कुछ। सर वो इसी मौजे में थी ये जो हाउसिंग सोसाइटी। माय लॉर्ड, एक स्टांस ये है कि ये हाउसिंग सोसाइटी वाज नाइदर हियर नॉर देयर, एंड इन द सेम ब्रेथ द अदर स्टांस इज कि वो हाउसिंग सोसाइटी थी, उसका प्लान भी अप्रूव हुआ था। अप्रूव नहीं, so then they should have restricted it to that. Where does metro trade come into the picture? They should have said okay fine, then why did the government not directly deal with DHA? Under the cooperative मिडिलमैन क्यों बनाया बहरिया को? भाई अगर इन्हीं को देना था जमीन, डायरेक्ट इनसे कर लेते तो सौदा, कम से कम लोगों की बचत होती, कम से कम DHA वगैरह में ये हेरा फेरी तो नहीं होती है, या होती है वहां भी? नहीं सर बिल्कुल नहीं होती, नहीं होती है, तो आपसे डायरेक्ट डील कर लेते, आप ले लेते इनसे जमीन। ये बीच में इनके जरिए क्यों आए आपके पास? he is land provider to DHA. पता नहीं क्या चीजें बना रहे हैं, ना किसी चीज का सर है ना किसी चीज का पैर है। बेसिकली सर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज एक्ट के मुताबिक उसको उन्होंने रजिस्टर्ड किया। हम किसी लॉ स्टूडेंट को दें ये असाइनमेंट, जस्ट पॉइंट आउट ऑल द लॉज दैट हैव बीन वायलेटेड, तो अच्छी खासी एक थीसिस बन जाएगी उस पे। हम होते केसेस देखते हैं कि एक दो कानून कभी कभी हो जाती है उसी कोई शिक, तो पूरे कानून आपने है ही नहीं, परवाह नहीं। वो चीफ मिनिस्टर बादशाह, वो फना बादशाह, लेकिन सर हम बादशाहत है हम तक तो सर इन्हीं के नाम पे म्यूटेट थी जो हमने। अब आप म्यूटेट से निकलो ना बात को, थोड़ा आप जरा ज़हन खोल लेना। ठीक है बस सर उन पे वो ऑरल आप पूरे पाकिस्तान की तबाही कर रहे हैं सर, ट्रांसफर नहीं, आप क्यों पाकिस्तान को तबाह कर रहे हो? आप खाओगे कि लोग खाएंगे क्या? पैसे की हवस प्राइवेट लोगों में तो समझ आता है, मगर जब आप लोग कर रहे हो तो समझ नहीं आता है। और इस पे वैसे कोई एग्रीकल्चर हो नहीं रही थी, एग्रीकल्चर तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये जो लैंड उस पे कोई एग्रीकल्चर नहीं था जी, जो लैंड ये ली है DHA ने, उस पे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कोई भी नहीं थी सर। आपने आज का अखबार पढ़ा हो शायद, सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इस चीज में माहिर है, ये भी मुझे इतराफ करने में कोई शर्म नहीं है कि हमारा इंस्टीट्यूशन की भी कोई अच्छी साख नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वर्ल्ड वाइड। कोशिश कर रहे हैं बेहतर करें, मगर आप लोग तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप लोग तो उसी पे चल रहे हैं, उसी राह पे। पूरे पाकिस्तान को एक हाउसिंग सोसाइटी बना दो, ना पेट्रोल है पाकिस्तान में, ना गेहूं है, ना चावल रहेगा, सब कुछ इंपोर्ट कर दो बस। दिस इज द प्लानिंग एंड लुक एट दिस पावरफुल पीपल। I don't know, it's a trade off agreement, अजीब अजीब चीजें। 3,400 कनाल पे 1 रुपया टैक्स नहीं दिया आपने, 1 रुपया नहीं दिया आपने। बना दिया सर, ट्रांसफर के ऊपर सर कानून टैक्स के लागू नहीं होते हैं DHA पे। नहीं सर, वो आपके ऑडिट होते हैं अकाउंट्स? जी सर हमारे वो भी एग्जाम्पशन ले लिया आपने? जी सर हमारा इंटरनल ऑडिट हम करते हैं। इंटरनल का नहीं पूछ रहा हूँ,
सरकारी ऑडिट होता है आपका या नहीं? नहीं सर, हमारे एक्ट में है कि हम खुद ऑडिट जो है वो करते हैं सरकारी। क्यों करें आप? यू ओन एवरीथिंग। सर हमने कोई टैक्स कोई ऐसी चीज नहीं है डीएचए में। क्या ऐसी चीज नहीं है? डीएचए पूरे टैक्सेस पे करता है गवर्नमेंट। दिखा दें, आप हमें दिखा दें कोई स्टैंप ड्यूटी दी है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए, हर चीज। किधर है? इस पे तो कुछ नहीं है। 3,400 कनाल आपने खरीद ली जमीन, ये सर 1 रुपया नहीं दिया सरकार को। नहीं सर, वो एट द टाइम ऑफ म्यूटेशन वो दिए सर। अच्छा, वो क्यों जहमत की? वहां भी एक कानून लिख देते डीएचए इज एग्जेम्प्टेड। नहीं सर, वो परवेज मुशर्रफ साहब थे, सरदार लिखवा लेते, एक ऑर्डिनेंस पास करवा देते एक और, ये जहमत भी ना करते। लॉ सर, वो जो एज पर लॉ कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ। क्या खूबसूरत बातें करने। I don't know what to do with this. My lord, case. I seek I mean, we are at a stage where everything has happened. My lord, courts have got involved even without questioning any of these things. My lord, I seek your lordship's permission. चूंकि pending था, आपने notice किए हुए थे on questions. My cooperative department wanted to advertise to the general public that all those members who were members of this society, if they are still affected or not compensated, not taken care of, they can come forward and file their claim within 30 days before the registrar cooperative. Because ये कह रहे हैं, अभी तक मेरे पास कोई record नहीं है कि इन्होंने कितने लोगों को वाकई compensate किया है। कोई allotment letters नहीं है। They must have किया होगा. I'm not disputing them, but I seek your lordship's permission to advertise this. Why do you need our permission? My lord, कोर्ट में पेंडिंग था, तो मैंने रजिस्ट्रार को कहा, तो मेरी बात हुई, मैंने कहा मैं अगली तारीख पे इस पे मैं I advised him to advertise this. No, you do whatever. Propriety demands कि हम सारे members के लिए एक large public, largely if they are not cooperating with you, you do whatever you want. My lord, we will do it now. नहीं, if they are not cooperating. मैंने सारी लिस्ट लगाई है, नामों के साथ लगाई है, उनके अलॉटमेंट नंबर। हमें ना बताएं, हम तो नहीं, इनको बताएं। एडवर्टाइज हो जाने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दे आर सेटिस्फाइड, दे आर सेटिस्फाइड। बेशक कर ले, बेशक कर ले। नहीं, हमें आपको हमारी परमिशन की जरूरत है। लिस्ट हमने इनको दे दी है, अभी भी लिस्ट है। आप डायरेक्ट इनसे बात करें। ये तो कह रहे they are now exasperated and say कि you're not providing assistance, that's why they want to do that. पेज 138 पे मैंने लिस्ट है ना जी, नहीं उसके साथ सारी स्पोर्टिंग लगाई है, आगे बाय नेम लगाया कि किसको कौन सा प्लॉट नंबर दिया, कहाँ दिया, कैसे दिया, हर चीज तफसील के साथ लगाई है। लिस्ट है ना जी। ट्रांसफर लेटर्स किधर है? ट्रांसफर लेटर्स कहेंगे तो वो भी प्रोवाइड कर नहीं चाहिए, हमें एक कागज नहीं चाहिए, इनको चाहिए। ये मांगे हमसे, हम देंगे। मांगा मेरे डिपार्टमेंट ने जी, नहीं जवाब मिला नहीं है कुछ। डिपार्टमेंट ने कभी कोई चीज नहीं मांगी, वो मांगते हैं हम देने की तैयार है। अब हम एडवर्टाइज करेंगे जी। So what is the way forward, Advocate General? My lord, the way forward is, as an officer of the court, the people who have violated the law with impunity must be held accountable personally. That matter is not before us. If you want to hold them accountable, go ahead and do it. My lord, who's stopping you? Learned single judge ने तो लिखा था, बाद में वो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का उसमें इंजंक्टिव ऑर्डर आ गया कि this matter be referred to the anti-corruption. They do whatever you want to do. I don't know. You are in government. You can do whatever you want to. What do you want with this litigation? My lord, अभी के लिए we will advertise that if there are any other effectees. नहीं, अभी तो हमारे सामने ये लोग हैं. They are prepared to meet each other. My lord, दूसरों के लिए मुझे जी वो जो नहीं है वो हमारे सामने तो नहीं है ना. वो आप जाने, ये जाने या लोग जाने, वो आपके पास आएंगे। जी हमारे पास आएंगे। We will advertise and we will give them 30 days time to file their claims with the registrar cooperative. पहले आप इनसे देख तो लें, ये कह रहे हमने रिकॉर्ड देने के लिए तैयार हैं। जी My lord, पहले नहीं दे रहे थे, अब देने के लिए रिकॉर्ड दे भी दें तो फिर भी एडवर्टाइज होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। But have we stopped you from advertising? नहीं my lord, मैं for the propriety sake I wanted as long as you don't mention Supreme Court. My lord, don't use our name for any of the purposes. That will not be, my lord. You want to do anything, you do anything you want to do. My lord, we are only concerned with the litigation before us. Now all these matters sound very strange that have come up before us, which should not be. Everybody has violated the law, it seems. I know. But at the end of the day, people are holding on to pieces of paper or land or have made houses. We don't want them to suffer. That's not what we want to do. So at the end of the day, they're not bothered. आप उनकी जमीनें ले लो या वापस कर लो, क्या होगा? Suffer तो वो करेगा ना जिसे पैसे दिए. So we have to. That's why I'm asking you, what is the way forward? I know जो affected members हैं वो
नहीं ये तो ये हो गया कॉम्पनसेट ना। हो जाएं तो दिस इज वी आर मैंने लिस्ट दी है 60 लोग हैं, उसकी लिस्ट दी है जिनको जो अभी तक राब्ता हमसे नहीं किया। ये 4-5 जो मौजूद है इनके साथ हम कर रहे हैं। बाकियों के हमने भी इश्तिहार दिए हैं, हमने पर्सनल नोटिस भी दिए हैं और कमेटी ने भी नोटिस दे दें, ये भी नोटिस दे दें, बुला लें, हम उनको कंपनसेट ऑलरेडी भी किया, अब भी करेंगे। तो ये तो कह रहे हैं हम भी देना चाहते हैं, आप भी देना चाहते हो, तो आप दोनों एक ही पेज पे, फर्क तो नहीं है ना। तो फिर इनको कोऑपरेट करें, शायद इनके रिकॉर्ड में कोई और एड्रेस हो उनका आदमी का, ठीक है कोई आदमी शायद हो सकता है। सर, वी आर रेडी। बल्कि सर टू शो गुड जेस्चर 60 बंदे जो नहीं आए उनकी पेमेंट हमने आपका गुड जेस्चर नेक्स्ट डेट पे देखेंगे। नहीं आप उसको सर इंशाल्लाह आपको गिला आप रिजर्व में रखें अपना गुड जेस्चर, लेकिन ये अर्ज and करने he will come and say that matter has been resolved. he will definitely will say that. एक पिटिशनर का नाम इन्होंने उस 60 लिस्ट की लिस्ट में भी नहीं लिखा जिसको कॉम्पनसेट नहीं किया, तो वो लिस्ट भी वो नहीं है, वो आपका तो भी पैसे जमा कराए हुए हैं, आप पिटिशनर थे बिफोर द हाई कोर्ट। चलिए अभी जमा कराए। हाई कोर्ट में पैसे जमा कराए। तो what we do is what we consider it as part heard and adjourn it, और क्या करें, क्योंकि आप ये part heard भी नहीं करने की, क्या करें आप इनको एक मौका दे दें। दीजिए सर, लेकिन अगले हफ्ते इसको मत कर दें, इसको तो आप लोग कितने दिन में मीटिंग कर लोगे? सर बेशक नहीं आप बताएं, एक हफ्ता, 2 हफ्ता, आप बताओ जो आप कहें। 2 दिन में भी हो सकती है भाई लेट्स बी रीजनेबल ना। चलें। सर अपना 26 नहीं 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जो आप बताओ। सर 15 दिन का तो क्यों सर? ईद से पहले, ईद के बाद। सर ईद के बाद ईद के बाद हो जाए तो ज्यादा नहीं आप मीटिंग्स पहले करें, हम केस बाद में लगा देंगे ईद के बाद। ठीक है सर। ठीक है, आप लोग अपनी कर लें मीटिंग, तो जरा आपको भी आराम से करना होगा ना, कि कह रहे हैं कुछ और लोग भी हैं वगैरह वगैरह। जी सर ठीक है। तो जैसे आप हैंडल करना चाहें, वी विल केस विल बी फिक्स आफ्टर ईद। ठीक है ठीक है सर। इसमें लिखें शेख सर learned counsel for the different parties took us through the pursuant to the last order. नहीं इसमें दोबारा लिख लें। In order dated 16 January 2024, certain facts were noted and eight questions were raised and the Registrar Cooperative Societies, DHA Rawalpindi, Bahria Town, and the Government of Punjab were directed to file their respective replies. Registrar Cooperative Societies has filed CMA number 2181 public 2024. DHA Rawalpindi has filed 2200 sir. 2200 2200 2024. Bahria Town has filed 2182 and 2183 and 2183 of 2024, and the Government of Punjab has filed. वो ज्वाइंट है, ज्वाइंट कंसाइज स्टेटमेंट है, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब का ज्वाइंट है। अच्छा मालूम उसमें लिखते हैं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैव फाइल्ड। ठीक है, during the hearing, a number of other questions have also arisen. That is, whether agriculture, whether agriculture land can be converted to residential oblique commercial, can be used for residential oblique commercial purposes without it question कर दें।
What other question had arisen? Proprietary of agreements. Proprietary of agreements. बाद में आ जाएगा. सर एग्जेम्पशन जो ली थी गवर्नमेंट से एग्जेम्पशन ली थी एमलगेमेशन के लिए उसकी पावर सीएम की. वो तो फिर फैसले में आते वाली बात है ना. Full stop. It is the DHA Rawalpindi and Bahria, as per the contention of DHA Rawalpindi and Bahria Town had sold, can I transferred, क्या लफ्ज लिखें? Allotted. Transferred. Had statedly transferred the land that it had acquired of the society to DHA Rawalpindi by entering into a tripartite agreement with DHA पेट्रोटेट agreement कहाँ है आपका पेज? 259 कौन सी CMA में? ये 2183 में पेज? 259 सेकंड पार्ट. ये agreement किधर है DHA? ये सर 2182 अगर लेना सर तो उसके पेज 259 पे. 259. Yes, ma'am. CMA number 2. Entered into a trade-off agreement, TRADEOFF agreement on 29 August 2007 with Petro Trade within bracket PVT, a subsidiary of Habib Rafiq within bracket PVT Limited, through its Chief Executive Mr. Zaid Rafiq. Bahria Town Private Limited, through its Chief Executive Mr. Malik Riaz Hussain, and Defence Housing Authority Islamabad, through its Administrator Iftikhar Ali Khan. We are informed that earlier an agreement was entered into between Bahria Town Private Limited and Colonel within bracket retired Abdullah Siddiq SIDDIQUE, Administrator, Revenue Employees Cooperative Housing Society Rawalpindi on 17 February 2005, and that the land of the society was transferred to DHA. Land of society was transferred to Bahria Town, which in turn transferred it to DHA through the agreement dated 29 August 2007. The nature of such purported agreements require much to be desired. Full stop. Learned Advocate General Punjab has stated that the administrator of the society, the term of the administrator of the society had expired, and he was not authorized to enter into an agreement. He further states that the chief minister
The then Chief Minister Punjab, namely Mr. Parvez Elahi, did not have the authority to notification क्या है वो क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है grant exemption to exempt the application of the Cooperative Societies Act 1925 whole scale कर दें whole scale and that the minister कौन सा minister थे minister for cooperative Minister of Cooperatives had in writing opposed the same. Nonetheless, it went through. Full stop. The agreement between Bahria town and the society is on the letterhead of Bahria town. And had provided that the members of the society have to be attended to within a period of 5 years. However, well before the expiry of the said 5-year period, the trade-off agreement was executed. The trade-off agreement, we are finding difficulty to understand the trade-off agreement and what did DHA get pursuant to that and what did each of the parties get pursuant to that? Let the said parties file concise statement attending to this query with a site plan showing the land with Google map, with attached Google map, where the respective areas should be marked. Full stop. The petitioners before us state that they will be that the grievance that Learned Council representing Bahria Town state that the grievances, that if an opportunity is granted, the grievances of the petitioners and others will be, an effort will be made to resolve the same. ठीक है ये कुछ और लिखे जितना लिख दिया हमने कुछ वजाहत नहीं की है बहुत ज्यादा लिख दिया ठीक है बहुत ठीक लिखा कुछ और लिखवाएं फिर नहीं सर काफी हो गए आपका ग्रेस का लिख दूं या बिना लिखवागी तो लिखेंगे सर शो करेंगे फिर इंशाल्लाह सर फुल स्टॉप the उसकी जरूरत नहीं है you can do whatever you want to my lord ठीक है there are different dimensions to this case. One is those who had invested and did not get anything. Those who invested and got a piece of land on which they may have utilized themselves or sold onwards, and those who did not, and the general legality. Refunded back the janab. Sorry to say. Land or refunded. Refunded. ठीक है. Thank you, sir. So, these matters will be attended to. These matters, ठीक है, बस अभी हम we are not going to say anything more.
सर तो आप जरा उसमें कंसाइज स्टेटमेंट जरा एक और फाइल कर दें, आपसे कह रहे हैं बहरिया एंड डीएचए सर इसमें और वो हमारी क्वेरी एक तो कन्वर्जन पे बताइएगा, दैट क्वेरी यू हैव टू अटेंड टू एज वेल on I mean agricultural land, can I open a building society on it or not? I'll file a concise भी जाओ तो housing scheme is housing scheme नजर आ My lord, I'll file a concise. ठीक है, so which देखिए, try to understand this. Now you travel anywhere by road, don't use the planes. You will see there's a network of societies all over the place, which means that naturally agricultural land is not as valuable as residential or commercial land. So everybody wants to make a housing scheme or society or whatever you want to call it. So they will naturally be enriching themselves, but it's a job of the state to ensure food security. They want money. You have to feed the population. So you have to ensure, no, I will not allow conversion of this land. This is agricultural land, no conversion taking place here. This is your job. This is not our job, but we will highlight it. Their job is, they only want to make money. Fine, they will sell anything. So, but there must be some check on them. Now, if all the lands get converted to housing, which are, most of it is just investment purposes and not being used. अब कर लें DHA में अभी रिपोर्ट मंगवा लेते हैं, कितने ऑक्यूपाइड हैं, कितने खाली पड़े हैं, सालों साल पड़े रहेंगे खाली, वो इन्वेस्टमेंट होती है, बस पड़ी रहेगी. My lord, my concise statement will address this. और जो नहीं अब तक काम हुए वो घर नहीं है, वो तो एक अलग बात होती है ना. और with the consequence होता है कि the actual people who need house, it becomes unaffordable. Yes. So that is another societal aspect. These are policy matters which the government has to think about, not the courts. But if the government is not considering them at all, we will make sure that you start thinking about them. So there's an element of food security. There's an element of pollution. The more urban sprawl, the environmental degradation of the environment takes place. Soil erosion takes place. Water scarcity issues develop. Water is being transferred from urban to from agriculture to urban use. All these things are compounded. So there has to be a clear vision, I mean, on this thing, not this one come and parks his society here, another one puts it there. This will be reflected, my lord. So ये जरा आप हमें My lord, this will. कुछ इस पे जरा आपको जरा think which I'm sure you know the issues. जी? This will be done, my lord. So the concise statement will be speaking for itself, my lord. No, this is not simple. It's very complicated. My lord, when the intent is right, the things can be done. No, but we must keep in mind the future also. वो बिल्कुल आपको बताएंगे. Pakistan used to export. Now we import wheat. Is that so? My lord, यूक्रेन से नहीं आई क्योंकि वहाँ जंग हो रही थी तो हमें प्राइसेस नहीं है तो ये नहीं है. So you know we were agricultural country थी. वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो भी जा रही है. I don't know what's. So these are all things. I mean, rivers are being polluted, soil, water scarcity. All these things are interlinked. And what is these societies? Just investment purposes, just lying empty. Most of them, they're not occupied. And do you even want to do that? And the genuine builders of the dwelling houses are being exploited, my lord, because your lordship has just mentioned वो price hike इतनी हो जाती है कि वो affordability नहीं रहती उनकी. Because the powerful builders' voice is heard in the corridors of power. The voice of the citizen is not heard in the corridors of power. How has this agreement been done in days? Minister is saying no. Try to show me another file in Pakistan where the minister says no, and not just because for wrong reasons, but he gives reasons. And the chief minister overrules him without even saying why is he doing that. Show me one file in the whole of government of Punjab. It's usually the other way around, that the chief minister may say no, the minister may want to do something, he is a check. Here the chief secretary looks the other way. The secretary bureaucracy is now completely subservient to whoever is the chief minister. वो हैं जी फाइल लेकिन वो सारी इसी किस्म की हैं. I have this bad fortune of looking into things. वो सारी इसी किस्म की. पहले bureaucrat लिखता था कि no, this can't be done. अभी कुछ लिखते हैं. That is the job of the bureaucrat. अभी भी कुछ लिखते हैं. This is wrong. Ministers decide policy matters. Bureaucrats ensure the laws are complied with. But this we haven't seen in this. The bureaucrats were as eager
अब समरी आती है, ऊपर से हुक्म आता है ये समरी भेजो, ये मैं नहीं भेजता हूँ. I have a different experience, my lord. In the last 7, 8, 9 months, there are officers who are taking stand also. I have noticed it myself. I'm not saying that they aren't, but then those are officers who probably are not appreciated and are not given this kind of postings that they deserve. It's a And natural those consequence. who are brown nosing, they get what they work in tandem. So these are grave issues of governance as well. My lord, they are. So we are always extremely reluctant in getting involved in governance issues, but we are just pointing out our concerns and expect you to be looking at them. My lord, I will. ठीक है? I will. तब हम किसी लगेगा आफ्टर इनकी ईद ना खराब करें, ईद के बाद आ जाएगा. हाँ, हो सकता है they get something before Eid. सर अगर इन्होंने ईदी दी तो ईद से पहले ही हमारी मीटिंग हो जाएगी. अच्छा, नहीं आप जब हैं तो अब हमें तसल्ली है, अब हो जाएगा. जी ठीक है. या कर ना, आप फिक्र ना करो. अरे इंशाल्लाह. चलिए, थैंक यू. Thank you. Is that it has been listed on different dates, and he gives the dates. I have also said it has been listed on 9 times. He does. I've also said it was listed. means in court or what? No, it listed in court. फिर क्या हुआ? In court. In one date, it was attached with 80 other election matters. नहीं, वो तो बाद में it was de-attached. उसके बाद बताइए. एक जो गलती है in the report of the registrar is in para 9. Just tell us. An adjournment was sought by the applicant. The applicant is not identified. It was respondent number 1. You know, a simple query was why did this case not see the light of day? It is for the court. And I know the registrar is giving a report. We wanted you to just briefly tell us, but we are really, and we didn't have time to read it. There have been occasions when it been listed with other election matters. Mr. Wasim Sajjad in one election matter started and completed his arguments. The report that Mr. Riaz had responded to that, and Mr. Wasim was to still give his rebuttal. Then mixed up with others, and on one date at least, where I noticed there were 60 cases, 80 cases. They were segregated. And then the 3 chief justices have been here dealing with this. Without something, उनके बाद में थे. Now the last state of hearing, my Lord the Chief Justice went under the impression as if I had taken any adjournment. I know. बात सही है, ये कोताही हुई, ये तो हमारी तरफ से हुई. खुश. यहाँ पे हम लोग नहीं उठा रहे. हम ये मेरा सेंटेंस में लिखा था, मेरा ऑर्डर में it does not reflect on any मुझे पता नहीं ऑर्डर पड़ा बहुत. इस ऑर्डर में आपने फरमाया था. अब मैं ऐसे करना चाहता हूँ, अगर आपके हैं क्या, मैं बताता हूँ. उनको हमें बताया गया तो उनको नोटिस ही हुई. फिलहाल I got in contact with him right now. I didn't want to rush. So numbers were that should be true. Notice पे वो मेरी एक question है उसकी बात जो आपने मुझे बताई. Election tribunal ने ये फैसला किया है कि election void है, लेकिन corruption और corrupt practices appellant को नहीं attribute की जा सकती. आज केस नहीं चला रहे.
पूछ रहे हैं do you want a special notice to your client or not? ये फैसला आपने करना है, आपसे मशवरा करना है। वकील हमेशा अपनी राय देता है, आप ये नहीं कह सकते राय नहीं दूंगा आपको, वो भी कह सकते हैं, मगर मैं नहीं चला हमेशा से जरूर नोटिस दे दीजिए जरूर। लेकिन इसके मेरा उससे राब्ता नहीं है। I told my office tried to contact. I don't even have his contact number. I'm told the office tried to contact. There's no responsibility. Sorry to keep you waiting. Note it down. अच्छा या साहब आइए मेरे रिपोर्ट दी है रजिस्ट्रार मैं आप इधर है नहीं तो आप कैसे देखेंगे ये भी हमारा लास्ट वाला दिखाइए जरा 19 का 7/10/2019। कसूरी कौन है? लास्ट ऑर्डर देखना चाहते हैं सर? सर वो 23/1/2024